Hello and good evening. How you doing? We are going to do DNF block. This we have covered the theory by the way. अगर आपने already session नहीं attend किया है, description में playlist है with DNF block. It looks like a very extensive chapter. बहुत बड़ा chapter लगता है, but we've done it just some 3 or 4 sessions. पर आपको एनसीईआरटी में पढ़ना बहुत जरूरी है. आई मे सीम लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड. हर सेशन में बोलता हूँ भाई एनसीईआरटी पढ़ो बिकॉज दैट्स द ट्रूथ ऑफ लाइफ. वेदर इट इज फॉर जेई और नीट, यू नीड टू डू एनसीईआरटी. व्हाट्स अप तनु, हाउ यू डूइंग? थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस. सो एज यूजुअल वी गोना डू अ लिटिल बिट ऑफ एनसीईआरटी थ्योरी और फिर हम लोग करेंगे अच्छे इंटरेस्टिंग सवाल फ्रॉम डीएनएफ लॉ. नाउ ये थियोरेटिकल चैप्टर है और आपके लिए मेटलर्जी और दूसरा कौन सा चैप्टर था, एक और चैप्टर हटा दिया गया था, सॉलिड से हटा दिया गया था. बट कुछ आइडियाज जो इनके हैं यहाँ पे यूज जरूर होंगे. रेडॉक्स रिएक्शन, डीएनएफ इज वेरी इंटरेस्टिंग, काफी चीजों को साथ में लेके चलता है और एक बार आप डीएनएफ कर लें उसके बाद कोऑर्डिनेशन बिकम्स वेरी इजी टू डू. खैर we'll start right away, but how confident are you in this? आपको कैसा लगता है ये theoretical chapter है, मुश्किल है, आसान है? How do you feel about this? So let me just quickly give you, oh by the way, the links of in the description have a few more interesting links. आप में से कुछ है देवांशी, आप में से कुछ लोग मांग रहे थे some sort of test series, revision, crash course, etc. 12th graders के लिए 11th graders पूरा syllabus मांग रहे थे, things are they're all in the link यार. description में कुछ चीजें हैं. if you guys want to pick that up, you can check it out, go to the BYJU'S Aakash BYJU'S site, वहां से आप लोग ले सकते हैं चीजें. खैर we're gonna get started right away. I've given you a link of my theory session and generally every session I'm working on. Let's get started. NCERT का थोड़ा बहुत रिवाइज करते हैं, then we do some questions. Rajanya, good evening. I'm great. How are you doing? Radhika, pranam. Hello, good evening. All right. So this is the session right here. Hold on. I know what's going to happen. It's going to become weirdly. Yeah, it already has. Hold on. Window capture. I'm going to switch that up to, yeah. There you go. And yeah, it doesn't get expanded for some reason. Okay, cool. We're going to do this, but hold on. Where are we at? Where's the tradition? हम लोग यहाँ पे हैं. We are on 19th December. कितने कर लिए हम लोगों ने already? How many sessions have we already done on this? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This is session number 8 on this whole S8 sulfur. Yeah, I know, forms of salt. On the whole fast track series. उसका भी link description में if you want to check it out. Yeah. Let's start off with looking at some NCERT things. Good evening, Papa. How are you doing? So, by the way, give me like a truthful thing. Yeah, you know, how many of you are actually reading the NCERT? मैं तो broken record की तरह बार-बार बोलता रहता हूँ भाई NCERT पढ़ो. But how many of you are really reading the NCERT? Like really reading it, like preparing it inside out, right? Let me know in the comments. I'm just interested to know what do you guys think about this? So what's important in this? सबसे जरूरी चीज is in the second page or third page, whatever page number this is. What page number is this? Khair, as you can tell, I'm just downloading these PDFs from the internet. Okay, not reusing. I know it says not to be republished. I'm not republishing it. It's just free class online, right? Khair, yeah, सबसे जरूरी चीज ये electronic configuration बहुत जरूरी है of the D block elements, specifically Z value of 20 to 30. This you must know. ठीक है. एंड हाउ डू आई रिप्रेजेंट देम? जो भी Z है उसमें से 18 तो हट जाएंगे ऑफ द नोबल गैस, राइट, विच इज आर्गॉन. एंड उसके बाद 3dx एंड 4s2 अप्रोक्सीमेटली, राइट, अदर देन कॉपर एंड क्रोमियम जिसका 4s1 होगा, 3d5 3d10 होगा, यूजुअली बी दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इससे इट विल बी ऑब्वियस राइट अवे कि अच्छा अगर आप 2+ आयन बना रहे हो तो उसका क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 3+ 4+ एटसेट्रा. यू कैन फिगर आउट आयन के कॉन्फ़िगरेशन एंड यूजिंग दैट यू कैन गेट बोर मैग्नेट्रॉन, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है नहीं है एटसेट्रा. वो सब पूरी राम कहानी आप निकाल सकते हैं फ्रॉम दिस. सो सबसे जरूरी पहली चीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस. मी राजेना मयूक, लवली. हे मयूक, हे ब्लॉसम, हेलो, हाउ यू डूइंग? टाइम मैनेजमेंट खराब है तनु. इट्स ओके दैट, आई मीन, सी व्हाट्स रियली इंपॉर्टेंट इज यू गाइस गेट सम फिजिकल एक्टिविटी, प्ले, गेट आउट फॉर एटलीस्ट 1 hour a day, वॉक, जो भी है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है. बाकी सब चीज यू विल फिगर आउट. वो आप करोगे देन यू विल हैव अ फ्रेश माइंड टू फिगर आउट एवरीथिंग एल्स. राधिका सेज ओके, ग्रेट. हाफ फिल्ड स्टेबल, या मयूक, वो भी चीजें बहुत जरूरी हैं. या एज आई वाज टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे जो है सिर्फ डी एलिमेंट्स हैं, बट लैंथेनम स्टार्ट्स ऑफ विद द लैंथेनाइट सीरीज. विल गेट टू दैट व्हेन वी डू एफ लॉक. उनके कॉन्फ़िगरेशन जरूरी है. कुछ चीजें मैंने यहाँ पे हाईलाइट की हैं, प्लीज एनसीईआरटी पढ़ लो. लेट्स नॉट डू दिस एनसीईआरटी रीडिंग वाला सेशन राइट नाउ. इफ यू गाइस रियली वांटेड, मे बी आफ्टर फास्ट ट्रैक गेट्स ओवर, वी विल डू दिस थिंग. आई हैव हाइलाइटेड समथिंग दैट आई फील आर इंपॉर्टेंट. ये चीज ज्यादा यूजुअली टेस्ट नहीं होती, ये वाली टेबल, बट आई हैव मेंशनड इट. यू नो, इफ यू आर usually in your mock test or whatever, if you're scoring a 650 plus and you
maybe then do this, otherwise जरूरत नहीं है सच, ये जो टेबल है अबाउट लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, आई नो सॉलिड स्टेट तो हट गया आपके सिलेबस में और मैंने ज्यादा सवाल इस चीज पे देखे भी नहीं है, बट बहुत बार आते हैं मेल्टिंग पॉइंट पे सवाल, या कि इनमें सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है, 3D सीरीज में क्रोमियम सबसे ज्यादा होगा, मोलिब्डेनम है, टंगस्टन है। टंगस्टन की तो बल्ब होती है ना, वो जो पुरानी वाली बल्ब होती थी वो इस शेप की बल्ब होती थी, व्हाटएवर दिस इज, या माय ड्राइंग इज नॉट सो गुड, बट ये छोटा सा जो फिलामेंट होता था ये टंगस्टन का होता था, दैट्स व्हाट इज ट्राइंग टू टेल यू। 3000 केल्विन, या 3500 केल्विन के आसपास है, ये मुझे अपने स्कूल टाइम से याद है, आई एम नॉट मेकिंग दिस अप। खैर, they also have a high enthalpy of atomization besides high melting points, yeah, and maximum again बीच में somewhere होता है। Manganese and technetium का low क्यों है, is a little complicated, we won't get into that right now, but if you want to check it out, theory session में थोड़ा इसके बारे में बात की है, atomization का जो है ये ग्राफ है, NCERT में ये तो ग्राफ दिए, I've given a couple of more graphs in the theory sessions, वो आप देख सकते हैं। half filled chromium half filled good evening medico, all right, which emits yellow light, yellow bulb, exactly, good evening Maruti, yes exactly, yellow bulb वही है। atomic size का variation क्या होता है, this is interesting, usually if you go across a period, मतलब period के आप across जाते हैं, then what happens, okay left to right ना आपके लिए उल्टा हो रहा है मेरे, yeah, so left to right if you go across a period then the atomic size decreases, क्यों, क्योंकि Z effective बढ़ता है, but यहाँ पे D block में total 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, that's a lot of electrons in the valence shell, right, they start pushing each other, इसीलिए somewhere in the middle Z effective तो बढ़ता रहे, जिससे छोटा होता है electron repulsion भी comes into picture, इसलिए somewhere in the middle just around cobalt nickel it starts to increase again, ठीक है। ये मैंने theory session में भी किया है, but remember it's not just a straight line, okay, or whatever, it's not just a decreasing thing, it slightly increase, this is atomic size, atomic radii if you want to know this। Ionic radii थोड़ा complicated है, beyond the stuff of what we're going to do. If you want to check out individual things, we'll do that on this site called ptable.org. You know that I like opening that up, right? ptable.org. Let's open it up. Hi, Bing. Oh, Bing. Yeah, I'm using Bing because it's easy to write on this. We'll talk about this in a bit. Okay, if we need to, we'll come back to this site if you want to look at certain properties. खैर, ये वाला scary सा table काफी जरूरी है. Now, when I say जरूरी, I don't mean you to mug it. Okay, don't mug it. But just keep reading it, kind of make flashcards, especially about 2-3 things, okay? This idea of delta H atomization generally increases then decreases, okay? This peaks at vanadium, okay? Ionization enthalpy 1, 2, 3. You will see that 2 and 3 की बहुत ज़्यादा है, ये numbers ज़रूरी नहीं है, but 1 is in the 600, 700, 2 is 1200, 3 is 23 to 3000, तो बहुत बढ़ रहा है, okay? So second and third ionization enthalpies are very high. बट इसके बावजूद भी आपको M2 प्लस M3 प्लस बहुत मिलते हैं, वाई, बिकॉज देयर इज अ डेल्टा एच हाइड्रेशन फैक्टर ऑल्सो दैट काइंड ऑफ इसको जो है ठीक कर देता है। लास्टली, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, इन दिस टेबल M2 प्लस M2 प्लस एंड M3 प्लस एंड M2 प्लस, ये वैल्यूज यहाँ पे दी हुई है, एंड यू विल सी सडनली देखो कॉपर का प्लस 0.34 हो गया एंड यहाँ के बीच में प्लस है। व्हाई डू यू थिंक दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ हाफ फिल्ड स्टफ, ओके, and ye fully filled orbital. Same wherever you see, like Mayuk said, wherever you see something weird, it's usually because of half filled or fully filled electrons. Yeah. Hey, Tamanna, what's up? What is scary? Not scary. Okay, great. Not scary. Amazing site. That's lovely, Mayuk. Good, you checking it out as well. Ionization enthalpies के बारे में ऊपर से बात की. I told you second and third are pretty high. Yeah. This is just a statement of fact. It's not. They don't talk about much as to why and how and all of that. So usually lowest oxidation state +2 होता है. Usually, why? Because that same idea, electronic configuration. You have argon, then 3dx and 4s2. Usually ऐसा होता है, copper और chrome के अलग होता है. So if these two go away, it's very easy. By the way, when you're filling the whole n plus l rule वाला चीज, right? With this is clear that 4s is greater than 3d. नहीं, hold on, उल्टा बोला मैंने ना. 3d is greater than 4s in terms of energy. मतलब कि पहले 4s में जाएगा फिर 3d में जाएगा, फिलिंग ऑर्डर, राइट? फिलिंग ऑर्डर में क्या होगा, पहले जाएगा 4s then 3d, but when you got to extract electrons, let's say when you ionize, मतलब extraction जो भी बोलना, तो extraction is a bad, is not the right word to say. When you ionize electrons, तब क्या होगा, तब obviously 4s इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आएगा. Why? Because the outermost, ये मैं बार बार बोलता रहता हूं, मैंने सेशन में बोला था, but I thought since we are doing revision, ये बहुत जरूरी बात है.
ऑल्दो फिलिंग ऑर्डर होगा 3D और 4s, सॉरी 4s एंड देन 3D, बाहर निकलते वक्त हमेशा 4s इलेक्ट्रॉन ही सबसे पहले बाहर निकलेगा. Why? Because the outermost electron, as simple as that. Also ये फिलिंग ऑर्डर वाला कॉन्सेप्ट ना आर्केइक है, पुराना है. और फिलिंग ऑर्डर इज नॉट लाइक कि भाई अकेला बैठा हुआ है कोई वेनेडियम का न्यूक्लियस, उसमें आप इलेक्ट्रॉन एक एक करके भर रहे हो, लाइक यू आर फिलिंग इन दैट थिंग, व्हाट यू कॉल दैट थिंग, वो प्लॉट 4 खेलते थे ना वो गेम, ऊपर से डाल रहे हो, एक स्ट्रिंग पे डाल रहे हो. इट्स नॉट लाइक दैट. इट डजंट गेट फिल्ड लाइक एन अबैकस, राइट? इट्स ऑलरेडी देयर. तो दैट्स अ थियोरेटिकल आइडिया. प्रैक्टिकल आइडिया क्या है कि जब मैं इलेक्ट्रॉन निकालता हूं कहां से निकलेगा? 4s2 निकलेगा. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग पहले ये निकलता है एंड यू गेट अ 3dx कॉन्फिगरेशन. दिस इज एन M2+ आयन. Want to spend a minute or two extra on this particular idea क्योंकि ये जरूरी है. ऑक्सीडेशन स्टेट्स यू हैव अ जनरल थिंग, या +2 कुछ जगह स्टेबल है, कुछ जगह +3. Mn मैंगनीज का तो +7 तक जाता है. मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, peaks out in the middle, yeah, and it also forms very interesting compounds like this which are complexes that we'll talk about when we do coordination compounds, whenever we do that. Trends जो M2+ के हम हैं, as always exception है because of the really high atomization energy of this thing, yeah. हम लोग इसके बारे में बात बहुत बार कर चुके हैं. दिस इज लाइक अ स्टैंडर्ड थिंग दैट इज आस्क्ड अ लॉट इन नीट एंड एवरीवेयर एल्स. हे अरुण, आई एम ग्रेट, हाउ यू डूइंग, हाउ यू डूइंग? It's all right, Teethaj, let's do this. Bhagya, pranam, it's okay. We just got started just like 10 minutes ago. Oh, it's been 10 minutes. Lovely. It's been 10 minutes already. It's been 10 minutes. Okay, we'll speed this up. The flare for the dramatic. Delta H hydration values. Look at this. Look at this. इसकी hydration value कितनी है और इसका ये कितना है? It looks like it doesn't get balanced out. 1800 और ये already 1800 और ये हो गया. Oh, this is interesting. Delta H atomization and all this. Now look at this. Atomization इसका जो है not doesn't seem very high. But look at this. Hydration छोटा है, ये बहुत ज्यादा भारी हो गया. Delta H2 इसका is very very high as compared to the others. So this is one of the reasons as to why this is 0.34. Now इसमें ना ज्यादा there's not much one can explain in this. Okay, it's a bit of theory that you must know. And ज्यादातर सवाल काफी डायरेक्ट ही आते हैं. They don't go into details in this as so much. Okay. M3+ और M2+ ट्रेंड्स भी उसी टेबल में थे. कौन सी टेबल में? जो बोल रहा था कि जो बड़ी सी टेबल थी यहाँ पे, राइट हियर. दिस हैज द M3+ एंड M2+ वाला ट्रेंड्स एज वेल. वी हैव डन दिस इन द थियरी सेशंस. अगर आपको ये थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, प्लीज चेक इट आउट ओवर देयर. व्हाट इज नेक्स्ट दैट आई फील इज इंपॉर्टेंट? ये वाला पार्ट सिंपल है, राइट? बोर मैग्नेट्रॉन का आइडिया. दिस इज the magnetic properties. जितने होंगे unpaired electron उतना strongly they'll behave in a magnetic field. So this is quantified by this formula that you see in front of you, under root of n into n+2. Now what's beautiful is the numbers that you get, right? इससे to get this value, n की value, how to get n? वही जो मैंने बताया था ना, argon 3dx 4s 1 or 2, yeah. Then you take out some electrons. कहाँ से होंगे, क्या बचेगा? You know, you use Hund rule, etc. etc. 5 होंगे. पहले you fill 5, then you fill this, etc. etc. वही सब चीजें, usual stuff. Which is why it peaks to 5 and then it falls off. Now look at this. I've mentioned this in my theory session as well. It goes from 1, 2, 3, 4, 5 and then 4, 3, 2, 1, 0, right? यहाँ पे देखो, जो भी unpaired electron है, calculated number has the same first number. Look at that. एक electron मतलब 1 point something, 2 point something. Although it is closer to the next number. Okay. If you have n is the number of electrons, then n+1 will be approximately n+1 is the integer value, will be the value in Bohr magnetron. You can see that 1.73 almost 2, 2.81 almost 3. In your case, you're not worried about integer numbers, right? आपको ऑप्शन हमेशा मिलेंगे ऑप्शन में, नीट में. जेई में maybe this is more relevant, but a general thing to note, very cool thing to note, एक ट्रिक जो आपको जल्दी से सवाल करा सकती है. Formation of colored compounds. This is done in detail in coordination compounds. डी ट्रांजिशन के बारे में बात होती है, एफएफ ट्रांजिशन के बारे में. बट जनरल आइडिया ये है कि अगर इफ यू हैव multiple unpaired electrons, then there is a transition that could happen between them because there's a bit of a splitting. T2G और EG वाली splitting होती है, तो they can jump around and all of that. वो सब चीजें आपको already idea है. But interestingly, ये D5 has a color, but F7 does not show color. Yeah, is not colored. Let's just say not colored. So थोड़े बहुत weird things happen when you go to F block. Okay. Anything else that you think is important over here to talk about? कुछ नहीं हो अरुण? Nothing happened whatsoever. Coordinate compound, very easy chapter. वाह ब्लॉसम जी, वाह ब्लॉसम, आई लाइक इट. मुझे तो यार कॉम्प्लिकेटेड लगता है, स्पेशली वो सारा, वो क्या बोलते हैं उसको, पूरा आइसोमेरिज्म वाला पार्ट थोड़ा फूफ. एनीवे, सो इफ यू गो टू कंपाउंड्स, ये पूरा एक अलग सा ही चैप्टर लगता है. लाइक अ डिफरेंट चैप्टर ऑल टुगेदर. यू टॉक अबाउट K2Cr2O7, दे टॉक अबाउट KCrO4, राइट, द क्रोमेट आयन, K2Cr
K2Cr04 and K2Cr207. They look like completely different things. Yeah, this is tetrahedral, etc. etc. ये चीज भी हमने थ्योरी में की है. यहां पे आ जाता है टाइट्रेशन वाला आइडिया. It slips in. Okay, this is a very strong oxidizing agent, and यहाँ पे you do titrations against these which are reducing agents, etc. etc. उल्टा बोला क्या मैंने? This is an oxidizing agent. This is fine. E naught is positive. What about these? Okay, cool. ठीक है. Anyway, इसको please पढ़ लेना. KMnO4 also is important. You need to know which is paramagnetic or diamagnetic. Para और dia कब होगा? अगर diamagnetic हुआ मतलब कि you don't have any unpaired electrons. Para मतलब unpaired electrons हैं. There is some disproportionation that happens here. इनकी properties हैं. We've done this in theory. It's I'm going to say it's important, but सवाल आते ही हैं इस पे, right? You will get at least 2 questions from this whole thing in one form or another. F block elements से सवाल आ जाते हैं, but usually they have to do with ionic radii या फिर lanthanide contraction या फिर ये आइडिया है यहाँ पे क्या बोलो यहाँ पे देखो F7, F0, F14 configuration and lastly F block में ये वाली चीज जरूरी है. Yeah, you have they form basic compounds, yeah, MOH whole thrice, which they are all basic compounds and they have all these weird reactions. That's it. That's all you need to know. Actinoids the actinoids are even more scary than than lanthanoids, right? As usual, your culprits are actinium, lawrencium, and बीच वाला कहाँ गया भाई मैं भूल जाता हूँ बार बार. Where's the middle guy? Americium, is this right? No, देखो गड़बड़ कर दिया. ये भाई साहब. Curium is somewhere in the middle, and interestingly, berkelium also has a F7. I'm focusing on F7 configuration. Okay, both of these have F7. So it gets a little random. I'm saying focus on these guys and maybe thorium at best. Beach wale to theek hai yaar, kitna hi mak karoge. All right, let's start with the questions. I want to take doubts, but what kind of doubts? Do you have any doubts? Look at this. Oh my good lord. There are 38 questions in this. 38 questions. Please karna isko. Please karna to make life easy for you in the NEET exam. Let's go back to this. Okay, and we'll see. We'll look at P table if needed to do things. Here's the first question. Very easy one, straightforward, direct sawal, right up, served up for you. The electrode potential of M2 plus M of 3D series elements shows positive value for which of these options? बहुत straightforward सवाल है पहला वाला. Yeah. Can I share table of common oxidation state of elements? Paramagnetic property have unpaired electron. Blossom G, it is there in NCRT. मैं समझा नहीं मैं आपके साथ क्या share करूं? It is in the NCRT, right? That's why I opened that up and showed that to you. Curium is in the middle. Tetra says curium in the middle. That's lovely. There's exception electronic configuration. Yeah. F block left to right increase ना. F block left to right increase. What increases तमन्ना? मैं समझा नहीं. What increase are you talking about? इस वाले का आंसर बताइए. I'm just reading off the comments that I missed out when I was talking. Giving you the whole lecture thing. In lanthanide actinium series, normally radius कम होता है या clearly कम होता है in case of lanthanoids and actinoids. In case of D block elements, end में जाके थोड़ा बढ़ जाता है radius because of lanthanide contraction. It almost definitely and poor shielding and all that हमेशा कम ही होता है radius. If that's what we're talking about radius. Hey, इस वाले का आंसर क्या होगा? Is it necessary to remember all this, Arun? I mean, nothing necessary. But I guess अगर नीट का एग्जाम देना है तो फिर पढ़ना ही पड़ेगा और क्या करें, right? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है. कहां दिया हुआ है? आंसर नहीं दिया हुआ यार. जिंक इज जस्ट वियरली कलर्ड. दैट्स नॉट द आंसर. तीर्थराज आंसर बताओ इसका. तमन्ना थिंक्स 1 is the answer. Yeah, I don't know why it's green. Yeah, I picked it off some other presentation. I didn't bother changing the green to another color. इसका ये आंसर नहीं है. हरा मतलब not answer. I know. I'll change the color, I guess. Hold on. Alt tab. Here it is. कलर बदल दे. आपको वो हरा कलर पसंद नहीं आ रहा. आपको लग रहा है वो आंसर दे दिया. That's the color of kryptonite. There's a TV show called Smallville. Have any of you seen it? I used to watch it as a kid. And I realized अभी भी Amazon Prime पे है. So I was like so excited. Oh my God, it's there. Still there. I mean, it's literally from my time. You know? खैर, there you go. I've changed the color for जिसने पूछा था. किसने पूछा था? किसी ने पूछा था कि भाई ये आंसर है क्या? बताइए इसका क्या होगा आंसर? I mean, it still could be zinc. I don't know. But I changed the color at least so that you don't get confused to see कि अरे आंसर दे दिया आपको. What going to use the answer? Rajanya saying copper. Simple है ना, इसमें तो कुछ सोचने की बात ही नहीं है. It has to be copper. I've just shown you this on NCRT. But फिर से अगर आपको ग्राफ चाहिए, here it is. Okay. Here is the exception to the rule. भाई साहब है ऊपर. Yeah, high atomization values, etc. बहुत कहानियां हैं इसकी. कहानियां भी थोड़ी बार let's explore.
It has a very high energy required to go from CuS to Cu2 plus, especially the second wala, right, is very, very high. It's not balanced by the hydration energy. And I showed you those numbers as well. Hydration energy जो है उसकी -2121 थी, but वो दोनों जो तीनों मिला के was much more than that. Okay. Atomization and ionization energy ज्यादा थी काफी. तो copper is the answer over here. अगला सवाल देखते हैं. Next question. Yeah. All right. Rajanya, Radhikar, Vaishnavi, Devanshi, Teesraj, Bhagya, and Pampa all getting this right. Blossom ji, yes. Cherry, did you misspell your name? Cherry Blossom is a cartoon character from the comic book called Archie's. I don't know if you meant that. Or is it, I think, also a plant, a tree? Yeah. Sakura, Cherry Blossom, that's also a tree. But anyway. Oh, that was Cheryl Blossom, I think. Anyway. Long time back. Given below are two statements. Statement 1, the E0 value for CE4 to CE3 plus is 1.74 volts. Statement 2, hey, हम लोग जेई का कर रहे हैं, नीट का कर रहे हैं. नीट का ही है ना? एक बार चेक कर लेता हूँ. Okay, because this is a JEPYQ, but it doesn't matter. Kar lo. CE is more stable than in CE4 plus state than CE3 plus state. In the light of the above statements, choose the most appropriate answer. आजकल नीट और जेई में सिमिलर टाइप के सवाल आते हैं. As you can see, yeah, assertion reason जेई में भी होता है, नीट में भी होता है. कर लेते हैं. AI, प्रणाम. अरुण, इस वाले का डी बोल रहे हो आप या लास्ट वाला? Okay, Cherry is saying copper for that one. I got it all wrong. अरे तमन्ना all wrong. Both statements are wrong, तमन्ना. Both statements are wrong. ये ऑप्शन तो दिख ही नहीं रहे. Both statements are correct. Statement 2 है. अच्छा, तमन्ना is saying that C is the right answer. All are दोनों जो गलत है. ठीक है. What do you guys think? Or are you saying everybody in the chat is wrong? I don't know what you're saying right now. Wow, Cerium की बात हो रही है सीधे, हाँ. Cerium 4 plus to Cerium 3 plus. Option C says AI. Okay. कि दोनों गलत है. ठीक है. क्यों यार गलत क्यों है? ज्यादा स्टेबल CE3 plus state नहीं होता है. I don't know. That's what I remember. Maybe what you guys are saying is right. मुझे तो ये याद आ रहा था कि CE4 plus या CE3 plus CE3 plus स्टेबल ही होता है ना. इनफैक्ट CE4 plus का रेडियस और भी छोटा हो जाता है. तो बस कैसे करें इस सवाल को? हाउ डू यू, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? कैसे करें? ओके, राधिका saying C, Teethra is saying B, Pampa is saying C, Vikas is saying D, Vikas is again saying D. 2 बार. यार वोट 2 बार नहीं दे सकते ना, एक बार बोलो. जैसे इलेक्शन में तुम एक बार वोट डालते हो ना, 2 बार डालोगे तो डजंट काउंट. तो एक ही बार बोला ना, हम यहाँ पे एक बार वही कर रहे हैं, हम लोग काउंटिंग कर रहे हैं. एक बार डाल दो ना. Teethra is saying B again. ठीक है. ओके. Teethra is saying B again. Teethra is the only person saying B. Everybody is saying C, D और अलग चीजें. खैर. देखो यार, जाहिर है one of these two statements is wrong because they're contradictory. You see that? Do you see that these statements are contradictory? CE4 plus to C3 plus is this. अगर ये सही है, if this is correct, then CE3 plus is more stable. Do you agree with me there? अगर ये गलत है, then statement 2 is correct. So it is, इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं और इसको कैंसिल कर देते हैं. तो it is either B or D. Do you agree with me there? AI changing their answer. Okay, Vikas also change their answer to B. Interactive panel नहीं है क्या? दे दो भाई, लगा देंगे. इंटरेक्टिव पैनल चाहिए भाई, पढ़ाई करने और टाइम पास करने. अभिषेक, मैं इंटरेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ इंटरेक्ट कर रहा हूं. पैनल पीछे लगा है. More time pass and you get from this channel. Rajanya says B. So, which statement is correct, guys? What do you think? देखो, this is one of the difficult things that if you've read the NCERT, you'll know. Otherwise, how are you going to get this? Look at this. एक बढ़िया सा statement दिया हुआ है NCERT में. The E0 value for CE4 plus to C3 plus is 1.74 volts, which suggests that it can oxidize water, but the reaction is very slow, and hence CE4 is a good analytical reagent. ठीक है, तो ये तो क्लियर है कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. ये वाला स्टेटमेंट है सही. अगर ये वाला स्टेटमेंट है सही, तो दूसरा स्टेटमेंट होगा गलत. ओके, हेंस द आंसर मस्ट बी ऑप्शन बी. कैन वी मूव ऑन? या AI, या वही सेम चीज है. असर्शन रीजन या ये सेम ही चीज है. एब्सोल्युटली
बी होगा 100% सही है। वैष्णवी, तमन्ना, विकास, राधिका, ब्रिलियंट। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम परमैंगनेट ऑन हीटिंग एट सम वियर्ड टेम्परेचर फॉर्म्स पोटेशियम मैंगनेट। मैंगनेट क्या भला होती है? we'll see. Both potassium permanganate and potassium manganate are tetrahedral and paramagnetic in nature. In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below. एक और assertion reason type का ही सवाल है ना? Well, not necessarily assertion reason, but those statements. अरे आपको दिख ही नहीं रहा है, I just realized सवाल नहीं दिख रहा, my bad, सवाल अब दिख रहा है, my bad, my bad, my bad. ब्लॉसम जी, अगला सेशन थर्मो का ही है, या? Sorry, I did not show you the question. Yeah, slide didn't show. I realized. हम बात कर रहे थे और slide दिख रहा था NCERT का. Potassium permanganate on heating at 573 Kelvin forms potassium manganate. What is permanganate? Permanganate is MnO4 minus. Permanganate is MnO4 2 minus. Permanganate is MnO4 minus. Manganate is MnO4 2 minus. खैर, both of these are tetrahedral and paramagnetic in nature. Try करते हैं. So कैसे किया जाए? How do you do this? The first statement is a little random, right? Like, किसको याद है टेम्परेचर? तुमको याद है टेम्परेचर? Do you remember the temperature? बोलते हैं कि रिएक्शन होता है. Let's assume होता है. But what temperature does it happen at? Do you remember this? Second statement we can prove with logic. First statement यार theory जाननी पड़ेगी. There's no other way around it. You have to know the theory. Permanganate. I'm looking it up on NCERT for you as we speak. 16 or 19, let's go back. Whoop. कहीं चला गया, कहाँ गया? Okay, permanganate मिल गया हमको. What were we looking for? See, slide is frozen. I'm frozen. I'm not frozen. Slide तो slide ही है ना, मतलब what do you want it to do? AI? I don't get it. Oh, पुराने वाला बोल रहे थे, पहले आप बोल रहे थे. Yeah, I forgot to switch between the things. खैर, Vikas is saying C, Tanu is saying C, and Tamanna is also saying C. Statement 1 is true, but statement 2 is false. Statement 2 is false, statement 1 is true. सबको याद है, मतलब कौन सा रिएक्शन है? मुझे तो याद नहीं है. तो मुझे याद नहीं है तो चलो एनसीईआरटी में ही देख लेते हैं. कहाँ है एनसीईआरटी में? कहीं दिया है क्या ये चीज? फुल रिएक्शन कैन बी गिवन बाय दिस थिंग. परमैंगनेट. मैंगनेट. Where is the reaction, guys? Do you know एनसीईआरटी में कहाँ पे है? MnO2 प्लस बहुत चीजें दी हैं इसके बारे में तो, है ना? खैर, कहीं ना कहीं तो होगा, but it's definitely there, right? Oh, I know how to search for it. Let's search for 573 Kelvin. That's what will help us, because all of you are saying कि ये सही है, तो मतलब फिर 573 कहीं ना कहोगे नहीं यार, 573 Kelvin नहीं है. कितना होता है 573 Kelvin? 300 डिग्री सेल्सियस ना? 300 ढूंढते हैं. I'm trying all kinds of ways to find it. नहीं मिल रहा है. खैर, I'm assuming that the first statement is correct. Let's assume that the first statement is correct. मतलब ये हो रहा है. This reaction happening. KNO4 you heat, you get K2MnO4 plus MnO2 plus O2. This is called disproportionation. I know, that's a disproportionation. ठीक है? Cool? Yeah? AI saying A, Rajanya saying C, Tamanna still saying C. That's good to know. Have you guys seen this reaction before ever in your life? ये reaction देखा है आप लोग क्या? कि ये होता है नहीं होता है? Have you seen this? You think C? Okay, all right. So, यहां पे है +7 स्टेट, यहां पे है +6 स्टेट. दिस इज +4, नॉट गिवन, बट यही है. Mn +7 इज 3d0, 4s0. Mn +6 इज 3d1, 4s2. ये होगा पैरामैग्नेटिक, ये होगा डायमैग्नेटिक. बट या श्योर, बोथ ऑफ देम आर टेट्राहेड्रल. ये वाली चीज तो हम लोग यहां पे देख सकते हैं. इन द सेशंस, इन द थियोरी सेशंस बाय द वे, बहुत प्यारे 3D models हैं to show you that they are tetrahedral, but in the interest of time and also my slides not getting incredibly heavy and dying, here it is. Okay, they are both tetrahedral. कौन सा क्या है? This one right here is manganate, 2 negative charges, and this is permanganate. ठीक है? Cool. So one is paramagnetic, one is diamagnetic. But yes, this reaction definitely happens. So answer is option C. Mn +7 diamagnetic. Thank you, Tanu. Absolutely right. Let's go on to the next question. And this one is interesting. ये पूरा logical वाला है. This is complete logical, just like a very easy one actually. Identify the process in which change in oxidation state is 5. हमको चाहिए change in oxidation state of 5.
So try this out. Try it out. Manganate is paramagnetic. हाँ सही बोला तुम. Arun, yes, Tanu, okay, great. Devanshi saying C on this one. और पिछला वाला C देवांशी. अच्छा पिछला वाला C. ये सर दिया है. कहाँ दिया है? समझा नहीं. पंपा सिंह सी इस वाला पिछला वाला. दिस क्वेश्चन लास्ट वन. अभी दिखाया था आपने. अच्छा. Cool. This question. Okay, tell me the answer then. Oh, acha, you remember? Are you talking about the session? Yeah. We did that in the theory session in detail. Those awesome 3D diagrams. That was pretty cool. Yeah. But they make the slides really heavy. So having a bit of animation and all, बैठ जाता है. So I thought let's do the NCRT thing. Anyway, if you want to see those slides, you can check out the videos in the description. Yeah, they're nice 3D models of the whole thing rotating and all of that funky things. इस वाले का आंसर क्या होगा? मुश्किल लग रहा है ये. सी कोई एक बोल रहा था अभी तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है. Is this difficult? Is this like because थोड़ा सा मैथ्स आ गया तो सब लोग की बत्ती गुल? मैथ्स कहाँ है यार? अच्छा ठीक है. AI saying A. यार AI एक बात बताओ. लॉजिक नंबर है 5. यहां है 2 क्रोमियम. नाउ unless the change is 2.5 per chromium atom, that is not possible. And 0.5 oxidation state change normally इसमें तो नहीं होता है. In these compound, what do you call them? D block compounds में नहीं होता है. Some P block compounds have this 0.5 वाला change, but D में तो मैंने नहीं देखा. So this is unlikely. C is unlikely according to me. We can see. हम लोग देख सकते हैं इसको. एक एक करके करते हैं. Since there's some confusion looks like. Vikas saying B. Tamanna, अच्छा, Wi-Fi is not connecting. Okay. Khair, let's do this. I think some folks have figured this out, but let's do this one step at a time. Devanshi also saying B. ये है पहला वाला. C2O4 यानी कि oxalate ion. Oxalate, right? H2C2O4. This is oxalic acid. You've heard of this acid? Oxalic acid. उसी का ion है. उसमें से H+2 निकाल दो तो that's what this means. And this becomes CO2. So it's going, this is +4. Okay, CO2 में तो +4 है, that's clear. इसमें लेफ्ट साइड में क्या है? 2C plus 4 into -2 because the oxidation curve will be 2 minus oxidation state is equal to -2. Why equal to -2? Because there is this charge right here. So from this, when you solve, you get C equal to +3. So you're getting 2 into +3 that goes to 2 into +4. तो इसका oxidation changes +2. So obviously is not the answer. ये वाला तो डायरेक्ट है. यही this is the answer, right? Mn is 7 plus यहाँ पे और यहाँ पे 2 plus. तो this is a change of 5. Delta On is 5 and this is the answer. बस हो गया. 2Cr plus 7 into -2 gives you -2. Why -2 again? Same चीज यहाँ पे. 7 यहाँ पे ये है. ये ऑक्सीजन का भाई साहब. That's it. So this guy is going to be 6. I mean, if you have done this इतनी बार करने के बाद ये हो ही जाता है, दिमाग में बैठ जाता है कि यार this is 6 and this is just 2Cr 3 plus, right? So this is going from 2 into 6 to 2 into 3, right? So that is 12 to 6, which is basically a change of +6. Hence not the answer. हमको आंसर तो ऑलरेडी मिल गया है. अभी हम लोग टाइम पास के लिए बस बाकी देख रहे हैं. और इसमें क्या है? This also is going to be 6 plus to 3 plus, right? And this is 12 to 6 because there are 2 atoms. This is 7. This is 7 to 2, which is 5, and this is 6 to 8, which is 2. Well, technically, actually, देखा जाए तो oxidation state per atom ही होता है ना. तो let's not do this +6 and all that. So actually, it will be just +1. Here it is a change of -5. Here is a change of -3. Here's a change of -3. Yeah, that's the delta oxidation number change per atom. Per atom. आगे बढ़ा जाए. B को लॉक कर दिया जाए. Tamanna, Radhika, Teethraj, Rajanya, Pampa are all saying B. AI is concurring. Vikas is giving us a thumbs up. Lovely, thank you. The effect of lanthanide contraction in the lanthanoid series of elements by and large. By and large means. By and large? I don't know. By and large. Is it by and large? I'm just checking the grammar of that one right there. Hold on. By and large. Yeah, by and large sounds good. Okay. On the whole, everything considered, says this: increase in atomic radii and decrease in ionic radii.
decrease in atomic radii and increase in ionic radii. Decrease in both atomic and ionic radii. Increase in both atomic and ionic radii. What do you think? What do you think? Theoretical सवाल ज़्यादा हो गए, but that's the nature of DNF block. You will have a lot of theoretical questions. पूरी inorganic chemistry ऐसी ही है. क्या करें? Theory पढ़नी पड़ेगी. और अगर आपने एक बार पढ़ा, then this is the easiest to mark. You mark and you move on. You mark and you move on. Like 10-20 सेकंड वाला question है. And in NEET, इस टाइप के सवाल काफी आते हैं, right? Because you don't have that much time. You have 45 questions. JEE में 25 सवाल होते हैं. You have 45 questions in NEET. So you got to do them quickly, right? जल्दी से पढ़ो, figure out, move on. What do you think? इस वाले का क्या होगा? What do you think? Do you want the NCERT open for this, or do you think you can figure this one out by yourselves? कैसा लग रहा है इसके बारे में? थोड़ा सोच के बताइए. C says Vikas. Okay. Devanshi also saying C. Lovely. Teerthraj, Rajanya, लग रहा है सब लोगों ने figure out कर लिया है. Yeah. AI also giving us C as the answer. Yeah, absolutely. It decreases in both of these. What is lanthanide contraction? These are lanthanoids. And they have really bad shielding, right? Zirconium or hafnium. They have the same radius because इनके बीच में आ जाते हैं पूरे lanthanoids. And because of poor shielding, that gets smaller, smaller. Both atomic and ionic. If you don't remember this, ये भी NCERT में है. Directly NCERT से सवाल है. C locked AI. Okay, sweet. Yes, Bhagya read my mind. Vaishnavis, Tamanna, Pampa, AI. Awesome. Yeah, Abhishek, absolutely. IOC is easy, but in fact, you know, it depends a lot on you. Like you get really good teachers, right? But आपको खुद पढ़ना है. That's what I tell everybody. Teacher is a support system, and it helps to have a teacher who is passionate and is telling you, encouraging you, obviously. But 90% of the stuff is on you, on what you take away from the teacher, and also how much effort you put in. So yeah, the lanthanide ion would show color. इनमें से कौन से ions show color? I gave you a hint on this question जब मैं theory कर रहा था. Try करके देखो. Right? What is the reason behind color? Either FF transition या DD transition. One of these two. Okay? Generally. Try this out. AI saying B on this one. Tanu also saying B on this one. Okay. Hey Vivek, how's it going? Vivek is saying La3+. Comes in, gives us the answer. Lovely. I like that, Vivek. Very nice. Option D को lock किया जाए. अच्छा, ठीक है. A और D. AI यार, तेरा तो ऑप्शन में भी ऑप्शन डाल देता है. ठीक है. You don't want to see B anymore. That's fine. But AI का आंसर इस तरफ लिखते हैं. Because वो A और D दोनों बोलना चाहता है. But there, Devanshi, Radhika, and Vikas, Bhagya, Vaishnavi, and Pampa are all saying D. Oh, Tanu changed their answer. अच्छा, ठीक है, सब लोग बोल रहे हैं D. Confidence. I like it. So what's the deal? How do you do this? Color is based on unpaired electrons. So let's get unpaired F electrons कहाँ से कहाँ पे है? This is F14, this is F0, and this is F7. ये मैंने आपको NCERT में दिखाया था. And I told you थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा. This is what you need to know. So this is not gonna matter. Yeah, this is F0 anyway. So this is like let's remove LA plus out. Yeah, LA is 5D1, 6S2. Okay, F0, 5D1, 6S2. तो तीनों चले गए. It's not gonna have any color. Okay. This is F14, and F14 के बाद it also has a couple of others, right? It has 5D1, 6S2. यही निकलते हैं and gives you back F14. I'm talking about the Lu3+. GD3+ also is an F7 thing. Now, what gets confusing here is although you have F7, this is also not colored. Yeah, I see why AI said it is either A or D. Yeah, because it's confusing. F7 है, भाई है. This one is definitely it, right? This is F5 species, 5D1, 4S2 हट जाता है. Right, this goes away. What you're left with is F5. But even if you don't know this, you can kind of guess this because you know for sure ये दोनों नहीं है. GD3+ can be confusing. I agree, right? So unless you've read in the NCERT, you read somewhere कि ये colored नहीं है, there's no way to know. So, but ऐसे सवाल आ सकते हैं,
Hence, I thought I'll give you an option, maybe option. But he was right. I mean, I'm not making fun of what you're saying. He was absolutely right. Yeah, sure nahi hai. So, AI and other folks were like, yeah, I've narrowed it down to two options. Tukka mat maro. That's my only request. Negative markings are your worst enemy, okay, in any competitive exam. So, जो पक्का मालूम उसको मार्क करो, नहीं मालूम छोड़ दो यार. Leave it, okay? All right, cool. I've gone into detail on this one. थोड़ा सा और theory. I'll give you these things. Don't worry. I'll send these notes to you as soon as the session's done. Answer is SM3+. Sprinkle of salt on fire. नहीं यार, जले पे नमक छिड़कना. अंग्रेजी में देखो कितना हाइफा लगता है. Sprinkle of salt on fire. Sound like कोई कुकरी शो में हम लोग बैठ गए हैं. What is it called? Master Chef India. नहीं AI. I'm saying your idea was right on target कि अगर A और D के बीच में पक्का नहीं आ रहा है तो leave the question. I did this in the morning session as well. You've got to know which questions to leave. And that is, I think, 90% of your job in a competitive exam. जो आपको नहीं मालूम है या जो नहीं हो रहा उसको leave it. Don't spend time on it. Why am I saying 90%? Because it's a matter of habit. Okay, आपको सवाल दिख गया, you want to mark it, you want to get it correct. But the ones you don't know, those are the ones that take most of your time or most of your mental energy. And that needs to be freed up for you to feel good about it. And sure, you'll get marks, you'll do well in the exam. But you need to feel good about it. That's important. खैर, let's get back to this. क्या कर रहे थे हम लोग? अगला सवाल देखते हैं. Good job AI, by the way, on figuring out it is either A or D. Everybody else who got it correct, Rajanya, Tanu, Pampa, Vikas, Vaishnavi, Bhagya, Tamanna, Radhika, Devanshi, Vikas, सब लोग D. That's good. That's great. That's great. What's going on? Shekhar, हम तो यहाँ पे अर्थ पे ही हैं अभी तो. जन्नों में तो नहीं कर. अर्थ पे ही हम लोग. कर लो यार. अगला सवाल करते हैं. 4 successive members of the first row transition elements are listed below with atomic numbers. Which of them is expected to have the highest E naught? ध्यान से पढ़ो. 3+ to 2+ value. Check this out. And you've got 4 options. कैसे करोगे? Electronic configuration. First principles. Please try it out. Yeah. Half filled, fully filled. Half filled, fully filled. Yes, Tanu. Absolutely. That's the way to do this one as well. Vivek, बिना सोचे आंसर दिए हुए B. I'm not saying बिना सोचे मतलब कि बहुत जल्दी आंसर दे. ठीक है, अच्छी बात है. That's what you do. Okay, great, Rajanya. इस वाले को करते हैं. Let's do this. Oh, Vivek and Vikas giving us answers D. बढ़िया. विकास, तमन्ना. अरे यार विकास तुम एक बार बोलो ना यार. टैली में फिर मैं 4 बार लिख देता हूं जैसे तुम लोग D बोलोगे इतनी बार. Devanshi and Radhika also giving the answers D. All right, lovely. Lovely, lovely, lovely. Will drop by around 7:15. Cool. All right. AI, Bhagya, Rajanya are all saying this, and Teesra are still sticking to B. Vivek and Teesra are giving us answers B. ठीक है. Logic क्या होगा दोस्त? Logic क्या होगा? I'll show you the values, sure, but this is trying to say a highest value, मतलब most positive value, would mean that the forward reaction is spontaneous. Do you agree with me there? The forward reaction is spontaneous. That is what this means. मतलब M3+ is unstable and M2+ is very stable. मतलब कि just a hunch. मतलब कि M2+ could be D5 or D10. Maybe. We'll see. अभी पहले क्या करना है? D electron लिख देते हैं कितने होंगे. Remember, this one should be 5, not 4. My bad. 5, then 4 क्यों लिख दिया? I did my scam way and I wrote 5 and 6 and 7. Okay. 5, 5, 6 and 7. 4s 1, 4s 2, 4s 2, 4s 2. ठीक है. अब क्या करना है? निकालने हैं 2 इलेक्ट्रॉन. 2 इलेक्ट्रॉन निकालो and see which one is the most stable. And you will see chromium is the worst. So it doesn't want to let the second electron go, boss. 1 electron hataya, it's happy. So this is definitely not the answer. Second electron hataya, oh, this is beautiful. Second electron yahan hata ke, this looks like it should be answer. But that, okay, M2+ is pretty stable. But what about M3+? What about M3+ there? That's interesting. So what is happening here? How do you guys get D to be the answer? Is it D or is it B?
Okay, so M2 plus is, but M3 plus, oh my god, guys, M3 plus would be a 3D4 system. Fe6, M3 plus would be, M3 plus is going to be F5, D5, which is really stable. So this is not the answer. So I'm confused between B and D. How do you figure this out between B and D? How do we do this one? What do you think? What do you think? D is the right answer or is it B? कुछ लोग बोल रहे हैं B, कुछ लोग बोल रहे हैं D. तो between B and D कैसे figure out करोगे? B also looks pretty stable. B is like 3D5 system. देखते हैं. Yeah. The trends generally क्या होता है? It increases from left to right. And there are some exceptions as always because भाई है तो chemistry है ना? Manganese is pretty high, but cobalt is higher. Sorry guys, I know what to do, right? Even I would, if I would not, अगर मैंने नहीं पढ़ा होता, say I have not studied NCERT. If I had not studied NCERT, then I'd say कि भाई लॉजिक बोलता है कि दिस शुड बी द आंसर एंड यू वुड बी करेक्ट, बट यार एक्सेप्शन आ जाते हैं केमिस्ट्री में, मुझे रोना आ जाता है, क्या करें? आंसर इज कोबाल्ट. ठीक है. या 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 इट्स ओके, वी कैन स्पेंड अ मिनट टू मोन, यू नो, वो शोक में बनाते ना, शोक मनाने के लिए 2 मिनट साइलेंस, वी कैन डू दैट. क्या करें यार, केमिस्ट्री ऐसा है कुछ जगह, इसलिए मुझे लगता है ये सब चीज आपको पढ़ानी नहीं चाहिए, कोई फायदा नहीं है इतना इतना इनऑर्गेनिक पढ़ के क्या करो, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ो, मजा करो, है ना? बट देखो, योर लॉजिक ऑफ दिस, या तमन्ना, कंफ्यूजन की बात नहीं है ना, सलोनी है व्हाट्सअप. तमन्ना, सीन ये है ना, प्रैक्टिकल थिंग्स टेक ओवर व्हेन यू आर डूइंग ई नॉट वैल्यूज ना, इट्स ऑलवेज प्रैक्टिकल स्टफ. आप जितना भी बैठ के उसको आप एनालाइज करो, जो होना है वो होगा. नेचर इज ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल. हम लोग एक लिमिट तक ही साइंस से नेचर को समझ सकते हैं, उसके बाद ये लिमिट के बाहर चीज रहती है, दिस इज लिमिट के बाहर वाली चीज, राइट? इफ यू लुक एट ई नॉट वैल्यूज, redox couples, these are the strongest oxidizing, it says, okay, मतलब ये they want to get reduced, but it is very clear table में भाई यही है, कोबाल्ट है भाई साहब. if you want to know the reasons, sessions देख लो यार मेरा, उसमें मैंने explained why cobalt is really messed up as compared to manganese, but like I'll be honest with you, इतना like unless you have seen this in NCERT, there's no way of knowing कि भाई ये हो रहा है. कहाँ गई ये वैल्यू? होल्ड ऑन, where is the table bro? अच्छा वो बड़ी वाली टेबल थी ना ऊपर, where did the table go? That huge table, रुको, हाँ here you go. कहाँ है M2 प्लस? हाँ मैंगनीज, देखो, एंड इन माय स्मॉल डिस्कशन आई मेंशन कि ये कोबाल्ट 3 प्लस टू 2 प्लस है और ये Mn 3 प्लस टू 2 प्लस. तो भाई भगवान होते हैं डिटेल्स में, गॉड इज द डिटेल्स. स्पेंड सम एफर्ट ऑन दिस. क्या करें, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं हम लोग, बट बिकॉज हम लोग इतना एफर्ट लगा रहे हैं, नीट में आपका ये सवाल सही होगा, अगर गलती से नीट में आया तो पक्का होगा सही. ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट. होता है यार, थोड़ा सा आगे पीछे होता है. ओके, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. होपफुली इट विल बी लेस पेनफुल देन दिस वन. अगला सवाल क्या है? हियर, नोइंग द केमिस्ट्री. देखो, शुरुआत में जले पे नमक समक छिड़क रहा है ना. नोइंग दैट द केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनॉइड्स is dominated by its plus 3. Do you know this? Oxidation state higher. This you know. Which of the following statements is incorrect? Incorrect कौन सा बताओ? नहीं नहीं, बेइज्जती नहीं फील हो रही है. It's okay. It was logical and then exception bro, chemistry. But देखो, ऐसे experiences है ना, you will never forget it. Now that you've gone through the experience, you're like, you'll never forget it. यही answer. That was the goal. या तनु, या लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन आउट. लैंथेनॉइड्स के बारे में एक सवाल है. ये Ln मतलब इट्स अ जनरल वे ऑफ सेइंग लाइक M, राइट? Ln just refers to all lanthanoids. It is not an element. La is lanthanum, yeah, and etc etc. Lu is lutetium, जो भी चीज है. L-lanthanide compounds are generally colorless, okay? Hydroxide are mainly basic in character, okay? Due to large size of Ln3 ions, the bonding in its compound is predominantly ionic in character. अच्छा अच्छा, एक मिनट, ये तो मुझे अजीब लग रहा है. ओके, हाँ, oh okay, cool. I was just stuck for a second. I was like, wait, but खैर, I think this is okay. Mahek thinks it's D. Is it because I spent some time on the last option reading and getting confused? अच्छा, no problem. जो आपको ठीक लगा बोलो. अच्छा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बॉटनी की तरह. अच्छा, तीर्थराज, हाँ यार, देखा जाए तो आई थिंक बॉटनी, zoology जो भी है, यू आर ट्राइंग टू स्टडी नेचर, राइट? And nature does whatever it wants. I mean, we can come up with science to try and understand
What's happening? Like observation से हम लोग एक level तक नहीं जा सकते because our observation is flawed, right? We are flawed machines, but you accept nature for what it is. Botany हो या inorganic chemistry. So Tamanna thinks D as well, giving Mehak some backup. विवेक saying D होगा या B होगा, ठीक है. विवेक बोल रहे हैं या तो D या B, ठीक है. Tanu saying B. Teethra is also saying B. Ooh, we have a split vote. 3 on B and 3 on D. What do the rest of you think? Excuse me. विकास, वैष्णवी, राधिका, पंपा, राजन्या, देवांशी, सलोनी, बहुत लोग बोलते हुए बी. अब 10 हो गए बी में. बढ़िया है, लगता है बी होगा, है ना? हाँ, गुड जॉब, गुड जॉब. देखो Ln3 इज उसमें F इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे ये देखना पड़ेगा. ये वाला तो डेफिनेटली सही है, राइट? पहला वाला, लुक एट दिस दैट ग्राफ, इट्स डेफिनेटली, ये तो सही है. Hence I'm saying, yeah, this is the answer, right? They are colored, they are all colored because they have more than 3 electrons. उसमें बहुत इलेक्ट्रॉन्स भरे रहते हैं, F इलेक्ट्रॉन होता है. Basic है, yes, this is also true. LNOH whole thrice basic है. With acid they give you H2. Yeah, that was in that thing, a table I'll show you. Yes, अगर cation हुआ बड़ा, then it is ionic. Okay, although if it has a large positive charge, it tends to be covalent, but because very, very big, so it tends to be ionic. If you want to see this, let me quickly show this to you on this guy here, Ln, right? Control F नहीं काम किया, Control A, Ln, अरे भाई साहब प्लीज दिखाइए, where is that? Oh my god. खैर, we'll stop being lazy. Let's just go there. Whoa, 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 whoa. This is bugging out a little, huh? Lanthanoids, Ln. Okay, here it is. This lovely little diagram on top of my head. With acid, they give H2. यहाँ पे देखो हाईलाइट किया हुआ है. Hydroxide are definite compounds. They are not just hydrides. Oh my god, ये नहीं करना था. I like that. Let's keep that. Yeah. All right. Cool. Shall we move on? Color तो होते ही हैं ये. That we have already established. और कितने सवाल बाकी हैं? I think we are almost at time. We have 5-7 minutes left. सवाल we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. काफी सवाल है. देखते हैं. Let's do how much we can. Let's do कितने कर सकते हैं. Identify the incorrect statement among the following. काफी है D और F के मिलावट के सवाल, right? This kind of is a combination kind of question. B है क्या? अरे नहीं नहीं, हाँ B है. तमन्ना, yeah, answer is B. विवेक, D क्यों नहीं होगा? अच्छा, महक पूछ रहे D क्यों नहीं होगा. ठीक है, we'll go back here. Because मैंने बताया ना कि अगर छोटा cation हो, Fajans rules are small cation means covalent. Big cation, opposite, right? Which is ionic. That's it. ठीक है? महक, is that okay? We can also look it up on our good friend here. यहाँ पे ionic कहीं ना कहीं लिखा है क्या इसमें? The best single use of lanthanides for production of alloy steels and pipes, mish metal, etc., etc. Ionic. Let me look for the word ionic. अगर NCERT में directly है ये चीज. Ionic sizes, ionic equation sizes. I think it should be there. Let me just see. Whenever I look for the word ionic, it's primarily giving me radii with the ionic thing. But yeah, the general idea, I think it would be because of the fact that it's a big atom, big ion, so it should be big positive ion, not negative. Yeah, big positive ion, matlab ki good pole. I mean, not, it's not going to polarize the anion, etc., etc. All right. इसमें D है क्यों, क्या समझा नहीं. All right. Hey Simi, oh, Vikas is Simi. Cool. All right. Simi, then tell me this one. Identify the incorrect statement among the following. D block elements show irregular, erratic chemical properties. La and Lu have partially filled d orbitals and no other partially filled orbitals. The chemistry of various lanthanides is very similar. That's a random option. Let's mark that one off. C wala to sahi hai, chodo. 4f and 5f orbitals are equally shielded. Simi is saying, yeah, Tanu and Simi are absolutely right. Next question. Good job. Lovely. This one is D. बहुत सही. इसके similar तो है ना, because they form kind of covalent compounds at times.
ये मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ई नॉट, इसका जो है देखो इरेगुलरिटी है, कुछ कोवलेंट कुछ आयोनिक है। ये भाई साहब कॉपर क्लोराइड इज डेफिनेटली more covalent than NaCl. So it's got some weird things going on because of this thing. So they have irregular erratic. ये तो definitely say, which means not the answer. They have partially filled d orbitals and no other partially filled orbitals. Yeah, these are extremes, right? La is 5d1 4s2. Same with Lu. It is F14 5d1 4s2. So ये वाला भी all good. Hence this is the right answer. Good job. Good job. तमन्ना, देवांशी, भाग्या, पंपा, सलोनी, राजन्या और सबसे पहले बताते हुए सिमी एंड तीर्थराज, महक, राधिका. ऑल राइट. हे विवेक सेइंग सी. अच्छा विवेक, आर यू ओके? दिस वन इज डी. अगला सवाल देखते हैं. द डाइवेलेंट आयन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन एक्वस सॉल्यूशन हैज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 5.92 बोर मैग्नेट्रॉन. फाइनली वी आर एट द बोर मैग्नेट्रॉन वाले सवाल. आई लाइक दिस, इजी क्वेश्चंस. ट्राई करो. You have to identify what does 5.92 mean. कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, देन बैक ट्रैक एंड गेट इट. बहुत जल्दी हो जाएगा उसके बाद. ट्राई इट आउट प्लीज. आई हैव गिवन यू हिंट ऑलरेडी. कितने होंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन वो फिगर आउट करो. देन फ्रॉम देयर लाइफ विल बी इजी. ओ इसमें भी डी. ओ और लास्ट वाला आप लोग बोल रहे थे डी. आई मिस्ड द कमेंट्स फॉर अ सेकंड. आर यू सेइंग डी फॉर दिस वन और द लास्ट वन, देवांशी? Okay, Devanshi said D again. So it looks like she's saying कि ये वाला D है. Okay, cool. Ah, Tamanna as well. Rajanya, was it D for this one or the last one? Looks like, sir, कल salt रहने से practical exam है. Some pointers. Rajanya, lab manual पढ़ के जाओ. Life will be good. That's my only pointer. I mean, salt analysis में cations are fun, right? You gotta do them once every time. Anions also gotta do. तीन टाइप के होते हैं. I'll go into detail about salt analysis, but tension क्यों दे यार? आप लोग पढ़ लेना लैब मैनुअल. सो यूल बी ओके राजन्या. आई जस्ट सॉ दैट कमेंट. डी दिस वन. ओके. तीर्थराज, राधिका, यही वाला. ओके. राजन्या, पंपा. ओके स्वीट. लुक्स लाइक या आई वांट टू एग्री विद ऑल ऑफ यू व्हेन यू से दैट. क्यों? इट नीड्स टू हैव 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डाइवेलेंट, मतलब M2+ इज 5. हमने एक ऑलरेडी एक सवाल किया था. यू नो फॉर श्योर इट्स मैंगनीज, राइट? कॉपर का क्या होगा? दिस इज द sorry chromium. What am I doing, bro? It's 4s1. I don't know why I keep writing 5d4. Let me fix that. So that looks funny as heck, right? It's really funny to write this. I think I did this at a time where I wasn't fully awake. इसलिए मैंने ये अजीब सा configuration इसमें लिख दिया है. Who writes copper as brilliant? There you go. Blue color से हो गया ये fix. Hopefully. Yeah, I'm a stickler for these kind of small things. Okay, cool. ठीक है. Argon is 3d7 4s2. Fe is here. This is here. You take out 2 electrons. इसका एक निकालो, इसका बन जाएगा 4. तो 5 बता सिर्फ इसका, which is the answer. How do I know 5 इसका है? Because yeah, this is root of 5 into 7, which is root 35. Approximately 6 से कम, little less than 6, which is 5.92. Right? I have already told you how to work this out. Excellent. आज का आखिरी सवाल. टाइम हो रहा है 2 मिनट बाकी. लास्ट क्वेश्चन कर लो भाई. And I'll give you a homework question. Same thing. Bohr magnetron वाला आइडिया करते हैं. In the ground state of atomic Fe, Z equal 26, the spin only magnetic moment is what? Into 10 power minus 1. Last वाला. Good job, good job. Yeah. Last सवाल. Let me call it a day. Let's do this one. Yes, तीर्थराज. अरे वाह, स्क्वायर रूट वाला साइड डालते हैं. एनसीआर डायरेक्ट. हाँ तमन्ना, ऐसे सवाल आते हैं नीट में. यही तो है. This is what is so fun about NEET. And also a little annoying because it increases competition a lot, right? Because if you have direct questions, then बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत लोग लिखते हैं. And then questions are also kind of direct. Makes life a little hard. What to do? What to do? January 1 में बहुत टाइम है महक, बहुत टाइम है. You'll be all right. Try this one, please. All right. B. Okay. राजन्या, तमन्ना, देवांशी, राधिका,
Tirtharaj, Mehak, Pampa, Vaishnavi, Tanu, and Prem. What's up, Prem? All saying C. Great. Hey, where did Simi go? Are you still trying this question out? How do you do this? Straightforward idea. Mu is under root of n into n plus 2 Bohr magnetron. Now, agar Z at 26, let's write that down. That's going to be argon followed by 3d6 4s2. ये वाला सही लिखा, हाँ सही लिखा है. अब इसमें से निकालो 2 इलेक्ट्रॉन, राइट? कितने निकालने हैं? Spin only. ओ ग्राउंड स्टेट. अच्छा छोड़ो, कुछ नहीं करना है. ग्राउंड स्टेट. देन दैट मेक्स इट इंटरेस्टिंग. ग्राउंड स्टेट मतलब ठीक है 4s2 तो भूल जाओ. Focus on 3d6. 3d6 is going to be this right here. Okay. So these guys pair up. And these are all unpaired. तो 4 है unpaired. तो अगर 4 है unpaired, तो number should be a little less than 5, right? Little less than 5 into 10 power minus 1. So that must be 49. That's the answer. But अगर करना है तो कर भी सकते हो. 4 electron मतलब 4 into 6. Right? Hey, hold on. 4 into 6. How do we get? Oh, 4 into 6 is 24. So matlab little less than 5, like under root of 24. Matlab 4.9 is the answer. 49 is should go. Excellent work. Good job. Good job. Hey, Simi also got it right. Simi, Saloni, Vivek and Pari all getting this right. Badhiya hai. Maza aaya? DNF is done. Here is your homework question. Since you guys asked for it, I have a couple of extra questions always prepared. ताकि अगर टाइम में थोड़ा आगे पीछे हो तो ये वाला कर लीजिए. ठीक है? Please try this one out. ये भी straight forward है, but do check it out. ठीक है? Okay, चलिए. I'll see you on Thursday with some thermodynamics. पढ़ के आना NCERT. इस बार तो पढ़ना पड़ेगा. ठीक है? चलो. And also solve those questions. ठीक है? At the back of the book. वो बहुत जरूरी है, especially when you need in physical chemistry, you need a lot of practice. In IOC, in inorganic chemistry, you just need to read. बहुत ज़्यादा theory पढ़नी पड़ती है. All right, I'll see you all on Thursday. आज क्या है? Tuesday. मिलते हैं Thursday को. Bye. Thank you so much for joining us. Next up है अंकिता जी की session का session. I think it's at 7:30, right? थोड़ा सा break लीजिए. Come back for it. Oh, and as always, अरे सुल्ताना टाइम हो गया जाने का, जाना ही पड़ेगा और क्या करें, है ना? I'll see you again on Thursday. Here it is, a link to all my sessions in general, and the description will have the link to this notes of the session very soon, and some more links to crash course etc. जो भी आप देखना चाहें हमारा. मिलते हैं Thursday को. All right, bye. Thank you so much. Thank you so much. Bye bye. Wait, I'm from Allahabad, but I've been in Bangalore most of my life. Prayagraj, yeah, Bangalore. Represent. Tata. See you all.